everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4, subject SS. We are starting with chapter number 2, the Northern Mountains, and this is my session number 1 for this chapter. So kids, session number 1 means you already know, right? First session, what we have to take up this year? Yes, first session has vocabulary words, which I will explain to you through the PPT. So, introduction and vocabulary words. Clear? So, now let's see the vocabulary words first, and after that we'll start with the chapter. Let's go through the PPT now. Chapter number 2, the Northern Mountains. First word, comprise. Comprise means to include or contain. To include or contain. See in the picture. You can see somebody is making a lemonade. Means नींबू का शरबत. So, what does a lemonade comprise? Lemonade में क्या होता है? What does it include? Or what does it contain? Yes, you can see that the person is squeezing a lemon and dropping the juice of lemon into the water. So a lemonade comprises of or it includes lemon juice. Right? Okay. Next word is peak. Peak means the pointed top of a mountain. The pointed top of a mountain. In the picture, you can see a big mountain, and the top of the mountain is pointed. It is not flat. The top of the mountain, is it flat? Mountain का जो ऊपर का हिस्सा है, top part, वो flat है या pointed है? Yes, it is pointed. So that part is called a peak. What is it called? It is called a peak. Peak means the pointed top of a mountain. Next word, abode. Abode means a house or home. A house or home. So kids, normally we all live in our own houses, right? Sometimes we visit others' house. But do we all live anywhere else except house? No, we all live in houses, right? So here, in relation to this chapter, snow, it also lives in some particular places. In the picture you can see the mountain. It is fully covered with snow, isn't it? Yes. So by looking at the picture you can imagine that this might be the house of the snow because it always stays there. कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो पूरे साल बर्फ से ढके हुए होते हैं, स्नो कवर्ड. So you can see that they are abode of snow. Snow का घर है ये. यहाँ पूरे साल स्नो रहता है. Okay? So abode means a house or home. Next, Greater Himalayas. Greater Himalayas means highest mountain range of Himalayan range, also known as Himadri. See, Himalayan range. Range किसे कहते हैं?
लाइन और द ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होता है ना, एक लाइन में बहुत सारे माउंटेन्स या एक ग्रुप ऑफ माउंटेन होता है तो उसे हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। तो हमारे इंडिया में ये कलर्ड पार्ट आप देख रहे हो, बाजू में पिक्चर के अंदर मैंने कलर्ड पोर्शन दिया है, वहाँ पूरा माउंटेन रेंज है। These mountain ranges are called Himalayan range. इन माउंटेन रेंजेस को हिमालयन रेंज कहा जाता है। In the picture you can see 3 different colors are used. Number 1, they are Greater Himalayas. जो सबसे ऊपर है, नंबर 1, they are Greater Himalayas. मीन्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। यहाँ सबसे ऊपर जो है नंबर 1 में वो ग्रेटर हिमालयास है। यहाँ पर सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं। दे आर ग्रेटर हिमालयास एंड ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। यहाँ नंबर 1 में जितने भी माउंटेन्स आते हैं वो बहुत हाइट वाले होते हैं एंड इस रेंज को हिमाद्री भी कहा जाता है, ग्रेटर हिमालयास। Okay. Next, outer Himalayas means the southernmost range of the Himalayas, also known as Shivaliks. जैसे नंबर 1 आपने पिक्चर में देखा कि वो ग्रेटर हिमालयास या हिमाद्री है, वैसे ही सबसे नीचे वाला जो है नंबर 3 वाला, you can see that? Yes. That is outer Himalayas or the Shivaliks. What are they called? They are the Shivaliks or the outer Himalayas. सबसे साउथ में, सबसे नीचे की तरफ हिमालयन रेंज जो है, ये कलर्ड पोर्शन तीनों के तीनों नंबर 1, 2 and 3 ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड हिमालयन रेंज। बट इस हिमालयन रेंज में 3 अलग अलग पार्ट्स है। नंबर 1 दैट इज ग्रेटर हिमालयास और द हिमाद्री। नंबर 3 जो है सबसे नीचे वाला वो है शिवालिक रेंज और द आउटर हिमालयास। Okay. Next, middle Himalayas means the mountain range of Himalayas situated between the greater and outer Himalayas. It is also known as Himachal. Number 1 greater Himalayas या हिमाद्री था। नंबर 3 the outer Himalayas और शिवालिक रेंज। इस नंबर 1 एंड नंबर 3 के बीच में जो नंबर 2 है, यू कैन सी दैट नंबर 2, दिस नंबर 2 which lies in between number 1 and 3, that is it lies between the greater Himalayas and the outer Himalayas. This is known as the middle Himalayas because it is in between them, and this is also known as the Himachal range. What is it called? Himachal range. Number 2 is Himachal range. Number 1 Himadri, number 2 Himachal and number 3 Shivalik. Okay. Next, glaciers. Glaciers means slow moving rivers of ice. See kids, in the Himalayan mountain range, the highest mountains are normally covered with snow throughout the year. But during summer, when the sun shines bright, this ice melts. This ice melts. You already know that, right? When you take out the piece of ice from the refrigerator or the freezer and keep it in the normal temperature, what happens? It gets melted and changes into water. In the same way, the snow-covered mountains, when they shine bright with the sunlight, this snow melts and it becomes water, and this water will slowly flow down as a river. So this slow moving rivers of ice,
These are the rivers which originate from melting ice or melting snow. They are known as glaciers. What are they known? They are known as glaciers. Next, valley. Valley. Lowland between two mountains or hills, typically with the river or stream flowing through it. Once again, lowland between two mountains or hills, typically with the river or stream flowing through it. In the picture you can see there are big mountains on both the sides, and in between these mountains there is a lowland. दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बट इन पहाड़ों के बीच एक लोलैंड है, मतलब नीचे का हिस्सा. यहाँ पर एक स्ट्रीम भी फ्लो होती दिख रही है आपको. करेक्ट. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड द वैलीज. इनको कहते हैं वैलीज. ऐसी जगह जो दो पहाड़ के बीच में है बट नीचे की तरफ होती है, और नॉर्मली यहाँ से रिवर या स्ट्रीम फ्लो हो रही होती है, तो इनको कहते हैं वैलीज. क्या कहते हैं? वैलीज. नेक्स्ट इज अ माउंटेन पास. माउंटेन पास means a route through a mountain range. A route through a mountain range. I have already explained to you what is range. Correct? Group of mountain or line of mountain is called a mountain range. So here you can see in the picture there is a road which is connecting all these mountains. So this route which connects through the mountain range is called a mountain pass. एक ऐसा रास्ता जो अलग अलग माउंटेन्स को कनेक्ट करते हुए जाता है उसे कहते हैं माउंटेन पास. ओके. A route through a mountain range is called a mountain pass. Next, mountain range means a group or line of mountains with a particular name. I already explained it to you. In the picture you can see there are so many mountains. They are either arranged in a line or they are near to each other, so they look like a group of mountains. These mountains will have a particular name. They are called mountain range. जो माउंटेन्स एक लाइन में बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं या एक ग्रुप में बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं माउंटेन रेंज. ओके. नेक्स्ट इज तराई. तराई मीन्स lowland region in the northern India that lies south of outer foothills of Himalayas. मतलब कि जो हिमालयाज है ना इंडिया में, मैंने आपके साथ मैप शेयर किया था, तो हिमालयाज के बाद जहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है एकदम नीचे का पार्ट, इट इज़ नोन एज तराई. मतलब स्टार्टिंग पार्ट जो होता है जहाँ से माउंटेन स्टार्ट होते हैं एकदम, तो उस नीचे के स्टार्टिंग पार्ट को क्या कहते हैं? लोलैंड एरिया को. इट इज कॉल्ड तराई इन इंडिया. व्हाट इज इट कॉल्ड? तराई. ओके. नेक्स्ट, ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड मीन्स अ पीस ऑफ एनक्लोज्ड लैंड planted with fruit trees. A piece of enclosed land planted with fruit trees. एक ऐसी एरिया जहाँ पर फ्रूट की ट्रीज लगे होते हैं, या एक ऐसा बगीचा जहाँ पर फ्रूट के ट्रीज लगे हैं. इट इज नोन एज एन ऑर्चर्ड.
What is it known? Orchard. A piece of enclosed land planted with fruit trees is known as an orchard. Okay. Next, terrace farming. Terrace farming means method of growing crops on sides of hills or mountains by dividing slopes into narrow steps. Method of growing crops on sides of hills or mountains by dividing slopes into narrow steps. एक ऐसी मेथड जहाँ पर हिल्स या माउंटेन के स्लोप को इन स्टेप्स की तरह कट किया जाता है. यू कैन सी दैट इन द पिक्चर. किया है ना स्टेप्स की तरह कट, और फिर उन स्टेप्स में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. व्हाट इज इट कॉल्ड? टेरेस फार्मिंग. Next, sanctuary. Sanctuary means protection or safe place for someone or something. यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, you can see some animals. इन एनिमल्स को कुछ लोग हंट करते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इनके लिए सेंचुरीज बनाई जाती है. सेंचुरीज का मतलब क्या है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पर इन एनिमल्स को प्रोटेक्टेड रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है. We are not allowed to hunt these animals or harm these animals or disturb them because they are kept safe in these sanctuaries. Okay. Next one, barrier. Barrier means a fence or other obstacle that prevent movement or access. In the picture you can see, यहाँ पर एक बैरिकेड रखाया गया है. They have also written stop. Means यहाँ पर आप रुक जाओगे, इससे आगे आप नहीं जा सकते. सो इट इज़ अ बैरियर और इट इज़ एन ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल मतलब कि आपके लिए रुकावट है वहाँ पर. दैट यू आर नॉट सपोज टू मूव फॉरवर्ड और एक्सेस अहेड, आगे नहीं बढ़ सकते आप. ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ बैरियर. मीन्स अ फेंस और अदर ऑब्स्टेकल that prevents movement or access. Next, dams. Dams means a barrier constructed to hold back water and raise its level. एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा ऑब्स्टेकल जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस लिए? पानी को रोकने के लिए. क्योंकि अगर यहाँ पर बैरियर नहीं है, डैम नहीं बना है, तो क्या होगा? पानी फ्लो होके आगे चला जाएगा. मगर अगर यहाँ पर रहने वाले लोगों को पानी चाहिए, तो उन्होंने वहाँ डैम कंस्ट्रक्ट करके पानी को फ्लो करने से रोक दिया है. पानी अब फ्लो नहीं हो सकता, तो इसलिए पानी वहाँ स्टॉक हो गया है, आगे फ्लो नहीं करेगा. इट हैज स्टॉप्ड मूविंग, इट हैज स्टॉप्ड फ्लोइंग. सो अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड बैक वाटर एंड रेज इट्स लेवल. यहाँ वाटर को फ्लो होने से रोका गया है, तो इसीलिए आप देख सकते हो पिक्चर में, एक तरफ पानी का लेवल एकदम रेज हुआ है, मतलब ऊंचा है, दूसरी तरफ पानी का लेवल एकदम नीचा है, लो है. It is not raised because there is less water. Correct? So these are the dams. I hope you have understood all the words through the PPT. Now let's move on to the general video lecture.
I hope you enjoyed the vocabulary words PPT and understood all the words, right kids? Yes. So chalo, now let's see what are we going to learn in this chapter. In this chapter we are going to learn regarding the northern mountains. Means these are the mountains which are located to the north of India. इंडिया के नॉर्थ की तरफ जो माउंटेन्स है हिमालयास, करेक्ट? ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? हिमालयास सुन के ही ठंडी लगने लगी. दे आर स्नो कवर्ड माउंटेन्स, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम इन दिस चैप्टर. The northern mountain comprise of some of the highest peak in the world. इंडिया के जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, दे हैव सम हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, माउंटेन पीक्स, दे आर लोकेटेड इन इंडिया, इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स और द हिमालयास. Mount Everest is the highest peak, while Mount K2 or Mount Godwin Austen is the second highest peak in the world. So in the world, which is the first highest peak? Yes, it is Mount Everest. And second highest peak is Mount K2, or it is also called Mount Godwin Austen. These mountain peaks are located in the northern mountains or the Himalayas. Some of the important peaks of the northern mountains are listed in the table. You can go through the table. They have given the name of the mountain and the height. कितनी height पर ये mountain है, ये भी यहाँ पर इस table में दिया गया है. So let's read the table once. Mount Everest. First one is Mount Everest. Its height is 8,848 meters. Next one, Mount Godwin Austen. Its height is 8,611 meters. Next, Kanchenjunga. It is 8,598 meters height. Next, Makalu. It's 8,481 meters. Then you have Dhaulagiri. It is 8,172 meters in height. Next you have Annapurna. Its height is 8,091 meters. Next, Nanga Parbat. Its height is 8,125 meters. Then Nanda Devi. Its height is 7,817. These are some of the mountain peaks which are located in the mountain range or which are located in the northern mountains of India, in Himalayas. Their heights are also given. Correct? So now you must be eager to learn more about these mountains. Right? But that part we will start in our next session. In today's session I have introduced to you the northern mountains and we went through the vocabulary words through PPT. Okay? I am sending a homework which is vocabulary words. You have to write the vocabulary words. If you have already seen this video, then you will be able to write the vocabulary words. So please go through the video, go through the vocabulary words in the video. Okay kids? Chalo, I hope you enjoyed this session. Next session we will start with the Himalayas. Okay? If you have liked this video, please click on the like icon. See you in the next session. Bye.